वालेकुम S.St. वेलकम टू टेक सोशल स्टडी क्लास। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों पहले जो है हमने हिस्ट्री का यूनिट एक पढ़ा था। अब हम जो है जीरो का यूनिट पढ़ रहे हैं। जो हमने स्टार्ट किया हुआ था यूनिट 12, ठीक है, द यूनिवर्स, द सोलर सिस्टम एंड द अर्थ। इसमें हमने यूनिवर्स के बारे में पढ़ा, इसके अलावा सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा। मेजरिंग डिस्टेंस इन स्पेस में हमने उसे पैमाइश करनी है, मतलब मेजर करना है कि उसका स्पेस का उसका फासला कितना है, ठीक है। इसके बाद पेज नंबर जो है 49 पे जो आज हमने पढ़ना है अर्थ के बारे में। The Earth is a round planet made of rocks, third in line from the Sun. It is the only planet discovered so far to have conditions suitable for life. The most important of these conditions is its distance from the Sun. It makes the temperature perfect for all form of life as we know it. What do you think would happen to life if the Earth was too near or near far from the Sun? जो अर्थ है वो राउंड प्लेनेट है, ठीक है। एक राउंड में बिल्कुल उसकी जो शेप है सारा मेड ऑफ रॉक्स, जो रॉक्स चट्टानों से बना हुआ थर्ड जो है ये इन लाइन में, मतलब देखने पे ये फ्रॉम द सन, सूरज से, ठीक है। इट इज द ओनली प्लेनेट जिसे एक सारा है जो दरियाफ्त हुआ है, जो हर कंडीशन में सूटेबल है जिंदगी के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कंडीशन है इसकी, इसका डिस्टेंस है, फासला है सूरज से। ये जो है टेम्परेचर को परफेक्ट बनाता है फॉर ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, तमाम किस्म की जो जिंदगी एज वी नो, जैसे कि हम इसके बारे में जानते हैं। व्हाट डू यू थिंक, क्या आपने इसके बारे में सोचे वुड हैपन टू लाइफ इन द अर्थ, कि क्या हो जब जो है जमीन वाज टू नियर, बहुत ज्यादा करीब हो, और नियर फार फ्रॉम द सन, सूरज के बहुत ज्यादा करीब। Just as the Earth revolves around the Sun's smaller body, a satellite revolves around the Earth. It is the Moon. The Moon does not have any light of its own, and the moonlight that we refer to it actually the sun's light reflected by it. Just as the Earth, ये जो Earth है revolves around the Sun, सूरज के चक्कर लगाती है। Smaller body जो है या फिर satellite revolves चक्कर around the Earth जो है जमीन के इर्द। It is the Moon, ये एक जो है मून है, चांद है। मून डज नॉट हैव इट, उसकी जो अपनी जो है रोशनी नहीं है, ठीक है। एंड द मून लाइट दैट वी रेफर टू इज एक्चुअली सन्स लाइट। ये जो है जो इसकी जो रोशनी होती है वो सूरज से मैनिफेस्ट करता है, यानी सूरज से दिन को लेता रहता है, रात को वो शाइन करता है, ठीक है। इसकी अपनी बजाते खुद रोशनी नहीं होती। Gravity. Gravity, have you noticed that when you drop something, it falls to the ground, and when you throw something up in the air, that too returns to the ground instead of staying up forever. This happens because the earth pulls everything towards its center, just like a magnet. This force is called gravity. Gravity जो है कशिश शकल को कहते हैं। Notice that when you drop something, जब आप कोई जो है कुछ चीज को ड्रॉप कराते हैं, it falls into the ground जमीन पर, and when you throw something या किसी चीज को आप थ्रो मतलब फेंकते हैं दायर हवा में, that too returns to the ground instead of staying up forever. बजाय इसके कि वहां पर हमेशा से रहे, वो वापस जमीन की तरफ आती है। ये जो होता है बिकॉज द अर्थ पुल्स, जमीन धकेलती हर चीज को टुवर्ड्स सेंटर, इसके सेंटर में, जस्ट लाइक अ मैग्नेट की तरह, जैसे मकनातीस होते हैं। दिस फोर्स इज कॉल्ड, ये जो है फोर्स जो है ये कॉल्ड ग्रेविटी कहलाती है, कशिश कहलाती है। नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 15। Centrifugal force, ये मरकज से यानी दूर। When we throw an object with force, it moves away from us in a straight line. This is due to the centrifugal force. The centrifugal force makes objects go as straight as possible until the force of gravity pulls them down. जब हम किसी चीज को, ठीक है, पूरी ताकत के साथ जो है फेंकते हैं तो वो मूव्स करती है, हरकत करती है अवे फ्रॉम अस स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन की तरह, ठीक है। दिस इज ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाती है, और ये जो है फोर्स मेक्स ऑब्जेक्ट को गो एज स्ट्रेट, बिल्कुल जो है सीधी लाइन में भेजती है, एज पॉसिबल जितना मुमकिन हो सके, यहाँ तक कि ये जो फोर्स है ग्रेविटी की पुल डाउन डैम डाउन, उन्हें नीचे की तरफ जो है भेजती है। नेक्स्ट है हाउ आर दिस फोर्स यूजफुल, मतलब ये जो फोर्सेस हैं कैसे जो है यूजफुल होती है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड द सेंट्रिफ्यूगल फोर्स टुगेदर स्ट्राइक अ बैलेंस ऑन अर्थ। द अर्थ अटेम्प्ट्स टू मूव in a straight line away from the sun because of the centrifugal force, but the sun's gravity pulls the earth towards itself. Because of these two forces pulling the earth in opposite direction, the earth takes the middle path and goes around the sun in a circle. Centrifugal force keeps the earth moving and gravity keeps in its orbit.
did not pull the Earth away from the Sun. The Sun's gravity would draw the Earth into the Sun, and if there was no gravity, the Earth would keep going in a straight line until it lost strength. ये जो फोर्स है ग्रेविटी की, कशिश चक्कर की जो फोर्स है एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टुगेदर इकट्ठी जो है पूरा से अब बैलेंस जमीन पर बैलेंस जो है रखती है. जो अर्थ अटेम्प्ट्स टू मूव इन अ स्ट्रेट जो है उसको मूव करती है एक स्ट्रेट लाइन में अवे फ्रॉम द सन और दूर रखती है सूरज से, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है उसकी वजह से. लेकिन जो सूरज की जो ग्रेविटी फोर्स है, ठीक है, और जमीन को टुवर्ड्स इट्स सेल्फ इसकी तरफ जो है भेजती है बिकॉज ऑफ दी ये जो दो फोर्सेस हैं, एक तो ग्रेविटी वाली और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाली पुलिंग द अर्थ, जमीन को पुल करती है ऑपोजिट डायरेक्शन, उसके मुखालिफ जो है सेम है. द अर्थ टेक्स द मिडल पाथ जो है और जमीन जो है उसका मिडल दरमियानी रास्ता रहता है एंड गोज हो जाता है अराउंड द सन इन अ सर्कल में सूरज के गिर्द. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है कि द अर्थ जमीन को रोकते मूव इन हरकत करती है एंड ग्रेविटी कोशिश में कीप्स इट ऑन इट्स ऑर्बिट इसके चक्कर लगाने पर. इफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिड नॉट पुल द अर्थ, अगर वो पुल ना करे जमीन को दूर रखे फ्रॉम द सन, तो सन की जो ग्रेविटी है वो ड्रॉ द अर्थ इनटू द सन की तरह मतलब ड्रॉ कर देगी. एंड इफ देयर वाज नो ग्रेविटी, अगर वहां पर कोई ग्रेविटी ना हो, द अर्थ वुड कीप गोइंग इन अ स्ट्रेट लाइन में रहेगा एंड अनटिल यहाँ तक इट लॉस्ट स्ट्रेंथ, ये खो देगी अपनी स्ट्रेंथ. ये जो है बच्चों हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इसके बारे में, इसकी फोर्स यूजफुल कैसे होती है उसके बारे में, ग्रेविटी के बारे में पढ़ा है. ठीक है, और इसमें कुछ क्वेश्चन है वो जो है राइट कर लें. पहले हमने दो राइट इसके कर लिए हैं, एक क्वेश्चन नंबर 1 और 2 वाला. ठीक है, प्लूटो सीस वाला और हाउ मेनी किलोमीटर डज लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर वाला. अब थर्ड क्वेश्चन इसका लिखें, व्हाट इज गैलेक्सी. व्हाट इज गैलेक्सी? अ क्लस्टर ऑफ स्टार, a cluster, clusters, cluster of stars is called galaxy. आप इसमें कंटेंट रिव्यू में बच्चों देखें कि एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 2, पहले जो 3 है ना वो वाला लॉन्ग हम उसमें 2 थोड़े लॉन्ग है और थर्ड वाला बहुत शॉर्ट है. ठीक है, वो हमने कर लिए हैं. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें एक्सप्लेन करना फॉलोइंग जो टर्म्स दी हैं. एक तो इसमें लाइट ईयर है, मेटेओराइट है, कॉमेट्स है और सोलर सिस्टम है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आप लिखेंगे एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स. ये लिखकर उसके बाद आपने हेडिंग देनी है लाइट ईयर की. ठीक है, हेडिंग देने के बाद फिर मैं पहले आपको लाइट ईयर का डिफाइन कर दूं, वो आप लिखें. साइंटिस्ट use a separate unit to measure distance in space, full stop. This unit of measurement, measurement, measurement is called a light year, full stop. It is the distance, distance, distance traveled, traveled by light on Earth in 1 year, which is calculated, CAL CULATED, calculated to the ground to be around 9 trillion kilometers. TRILLION. लाइट ईयर को मैं रिपीट करती हूँ इसके आंसर को. साइंटिस्ट यूज अ साइंटिस्ट SCIENTISTS use a separate SEPERAT separate unit to measure distance in space, full stop. This unit of measurement is called a light year, full stop. It is the distance traveled by light on Earth in 1 year, which is calculated to be around 9 trillion kilometers. KILOMETERS, full stop.
सेकंड इसमें है, लिखें meteorite, METEOROIT. Meteorites are small rocky, ROCK, rocky or metallic, MEDDLEC, objects, OBJECTS, objects from space that keep colliding, COLLIDING, with the Earth's outer layer of gas, with the Earth's outer layer of gas. ये बच्चों जो क्वेश्चन मैंने आपको राइट करवाए हैं, इनको याद भी करना है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।